Hello everyone, welcome to Saurasar classes. This is the also question from ISI BStat B.Math group B question. That means the question may have more than one option is true. मतलब एक से भी ज्यादा ऑप्शन ट्रू हो सकता है. तो हर एक क्वेश्चन का स्टार्ट करने के पहले हम लोग को अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम इंटीजर नंबर. ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, आगे भी आता रहेगा. ओके, दिस इज सो लेट्स ट्राई. इफ क्वेश्चन में क्या दिया गया है हम लोग पढ़ते हैं पहले. इफ n square plus 90n plus 92 is a perfect square, then the possible value of n may be okay. So दिया गया है कि n square plus 19n plus 92 is a perfect square. What is perfect square? That means this is the perfect square में मतलब this is a something square of any integer. Okay, यहाँ पर हम लोग एक को पॉजिटिव ही लेके चलते हैं ज्यादा टाइम, बिकॉज नेगेटिव होगा तो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही कर देगा. सो दिस इज बिलोंग्स टू z प्लस. सो यहाँ पर दिया गया है कि n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. एंड व्हाट इज n? यहाँ पर n का वैल्यू, n का कैरेक्टर कुछ बोला नहीं गया है, बट ऑप्शन से हम लोग बोल सकते हैं कि n शुड बी एन इंटीजर. सो n इज एन इंटीजर. ओके, क्योंकि इंटीजर से बाहर होगा तो यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है. सो ऐसे ही हम लोग को कभी कभी ऑप्शन देख के भी चूज करना पड़ता है कि अननोन नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या कैसा होगा. सो हियर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर. सो लेट n स्क्वायर प्लस 19n plus 92 equals to a square, as because this is given that n square plus 19n plus 92 is a perfect square. So this implies n square plus 19n plus 92 minus a square. Okay, equals to 0. Now by Sridhar Acharya, the root of this equation can be written in the form as minus 19 plus minus root over of 19 square minus 4 into 1 into 92 minus a square by 2a. Okay, so this is given that n equals to minus 19 plus minus 19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर होता है 361. ओके, माइनस 4 इंटू 92 मतलब 368 प्लस 4 a square by 2. So this is minus 19 plus minus root over of 4a square minus 7 by 2. Now as n is integer, then in this expression, okay, the part which is under the root, this is also might be a perfect square. Otherwise we cannot get in integer form. अगर ये perfect square नहीं होगा 4 square minus 7, तो हम लोग को रूट कैसे कैंसिल करेंगे? अगर रूट कैंसिल नहीं होगा तो हम लोग इनको इंटीजर फॉर्म में कैसे पाएंगे? तो दिस शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर. सो as n is integer, then 4a square minus 7 also in a perfect square. That means let k square, where k belongs to z. Okay, so then इस k square को राइट हैंड साइड से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे. दैट मीन्स 2a square minus k square equals to 7. This gives 2a minus k into 2a plus k. ओके, 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 into 1. Now 2 case arises. What? Case 1. Case 1 एंड राइट में हम लोग करेंगे केस 2. क्या होगा केस 1 केस 2 में? केस 1 में दोनों का मल्टीप्लाई 7 into 1 होगा. सो आइदर दिस वन विल बी 7 and this one will be 1. That means 2a minus k equals to 7 and 2a plus k is 1.
ठीक है, अगर ये नहीं होगा देन केस टू में क्या होगा, 2a minus k will be 1 and 2a plus k will be 7. ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं, इस दोनों का अगर सॉल्व करेंगे सो सब्सट्रैक्ट करते हैं, दिस पार्ट सब्सट्रैक्ट दिस पार्ट। ओके, दैट मीन्स हम लोग को मिलेगा 2k इक्वल्स टू माइनस सिक्स यस, देन दिस इंप्लाइज k इक्वल्स टू -3, k इक्वल्स टू अगर -3 बैठाएंगे यहाँ पर सो ये हो जाएगा 2a प्लस k। ओके, so then a, what will be the value, 2a plus 3 equals to 7, and this gives 2a equals to 4. Okay, then यहाँ से केस में आया a equals to 2 and k equals to -3. Okay, this is the answer of this part, and from this part we will get 2a, that means minus 2k equals to -6, minus 2k is -6, that means k equals to 3 and a equals to k equals to a equals to 2. So यहाँ से हम लोग को मिलेगा a equals to 2 and k equals to 3. Okay, so in both case we get a equals to 2. So अगर a is equals to 2 को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, so we put a equals to 2 in 1. So we put a equals to 2 in 1, we get हम लोग को क्या मिलेगा again, n equals to -19 plus minus root over of 4a square minus 7th, I think, हाँ, that means 4 into 2 square minus 7 by 2. That means this gives n equals to -19 plus minus root over of 16 minus 7. 16 minus 7 means 9 by 2, which gives -19 plus -3 by 2. So क्या होगा, इनका दो ठो काट, -3 by 2 and -19 -3 by 2. So this gives n equals to -8, and this gives 19, 20, 21, 22. So this gives -11. So इनका कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल है, n equals to -8, -11. तो ऑप्शन में देखिए n equals to -8, yes, equals to -7. Therefore B and D both true. This is also very good question. Okay, and this is the way how to handle such type of question. Okay, thank you.